Alright, in this lecture we are going to do two topics mentioned in your syllabus. One is stop and frisk, second is search and seizure. कि किस तरह से हम stop and what do you call it? What is stop and frisk? How is it carried out? And secondly, what is search and seizure? How is that carried out? So, yeah, let's begin the lesson. Okay, first of all, what is stop and frisk? The situation in, अब ये एक proper term है, ये stop अलग चीज़, frisk अलग चीज़ नहीं है, it's used collectively, this term. और ये है क्या, the situation in which a police officer who is suspicious of an individual detains that person क्या है, this is stop, and runs his hands lightly over the suspect's outer garments, ये क्या है, frisk. ठीक है, stopping is stop detaining that person temporarily, and frisk is patting down your hands over his clothes. Outer garments is very important here. You cannot search inside the garments, आपने बस pat down करना है. To determine if the person is carrying a concealed weapon. ये basically जिस तरह हम अक्सर we go and there's security there, तो वो basically है, that is stop and frisk. One of the most controversial police procedures is the stop and frisk search. Now let me tell you why. Stop and frisk is controversial क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है the police officer needs to be have some ground for suspicion. अब ये ground for suspicion पूरे का पूरा police officer के पास है, इसलिए ये even more developed countries में ये काफ़ी controversial है कि कहा जाता है the police officer can manipulate this right. He can say कुछ भी कह सकते हैं, हाँ I was suspicious और कर लो. तो ये एक वो right to freedom और वो जो है उसको थोड़ा challenge करता है, which is why it's very controversial कि police officer can misuse this authority. This type of limited search occurs when police confronts a suspicious person. ये suspicious person की जो definition है, it completely relies with the police officer. So that is why इसका थोड़ा सा issue आता है. In an effort to prevent a crime from taking place. क्योंकि जब आपको किसी पे शक होता है तो आपको लगता है कोई किस किस्म का शक, ये कोई criminal activity करने जा रहा है, तब आप stop and frisk कर सकते हो. The police frisk, जो कि pat down है, the person for weapons and question the person. Brief questioning भी होती है. A stop is different from an arrest. What you need to understand is that stop is not like an arrest. That person is not arrested. An arrest is a lengthy process in which the suspect is taken to the police station and booked. वो एक proper formal procedure है that needs a warrant, जबकि stop does not. Whereas a stop involves only a temporary, ये बहुत temporary होता है, interference with a person's liberty. जो उसकी एक liberty है, एक freedom है, उसको आप temporarily रोक देते हो. If the officer uncovers further evidence during the frisk, अगर तो उस officer को, वैसे तो वो टेम्परेरी होता है, अगर उस ऑफिसर को उस फ्रिस्क के टाइम पे उसके बारे में उस मतलब किसी किस्म की ऐसी एविडेंस मिल जाए जो कि ख़तरे की बात है, जो कि उसकी सस्पिशन को सच साबित करती है, तो फिर दैट ऑफिसर द स्टॉप में लीड टू एन एक्चुअल अरेस्ट. फिर वो स्टॉप जो है वो एक अरेस्ट में कन्वर्ट होकर आप उसको अपने साथ ले आते हो. बट इफ़ नो फर्दर एविडेंस इज़ फाउंड, the person is released. अगर तो evidence मिला है, so you can take it to arrest, that is up to the officer. अगर evidence नहीं है, so then that person is let go. Unlike a full search, a full, देखो आगे हम search and seizure भी करेंगे, stop and frisk भी करेंगे. There is a difference between stop and arrest. उसी तरह there is a difference between frisk and search. Unlike a full search, a frisk is generally limited to patting down the outer clothing. उससे ज़्यादा आप search नहीं कर सकते. उससे ज़्यादा करोगे, so that is not according to the law. If the officer feels what seems to be a weapon, कोई ऐसी चीज़ officer को weapon लगती है, the officer may then reach inside the person's clothing. अगर कुछ feel हुआ तो. If no weapon is felt, the search may not intrude further than the outer clothing. Why did I mention at the start कि दिस इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, कि जब आप ये सारा कुछ देखते हैं तो आपके माइंड में आता है कि ये इसमें ऑफिसर को ज़रूरत से ज़्यादा ऑफिसर की ओपिनियन को और स्टांस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जो कि क्योंकि दिस थिंग इज़ वेरी वेग. इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है, आप एक ऑफिसर से ये राइट ले नहीं सकते, लेकिन ये है कि एनी ऑफिसर कैन मैनिपुलेट दीज राइट्स. तो दैट इज़ व्हाट स्टॉप एंड फ्रिस्क इज़. After that, what is search
and what is seizure. A search is a process conducted by authorized agents, authorized कौन? Police, of the law going through part or all of individual's property. उस individual की चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कोई भी उस individual की चीज़ है, उसको search करना जो है, that is called a police search. Looking for specific items, ये नहीं कि बिला वजह, when you have any reason to search for it, that are related to a crime. आप जाते हो and you try to get information to prove a crime that they have reason to believe has been committed. अब आप उस crime से related कोई piece of evidence ढूंढ रहे हो तो फिर आप search करते हो. A seizure, what is seizure? A seizure happens if the officer takes possession of items during the search. आपने search conduct किया और उस search में आपको कोई चीज़ मिलती है तो official channel के through आप जब उसको as evidence collect करते हो और उससे वो चीज़ ले लेते हो तो that is called a seizure. Search and seizure के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं. Search and seizure is a procedure used in many civil law and common law legal systems by which police or other authorities and their agents, मतलब primarily कौन करता है search and seizure? Police, who's suspecting that a crime has been committed, commence a search of the person's property. You need to have a suspicion for a search to take place. Randomly नहीं होता, आपके mind में एक direction आती है that is leading to the person and a search is inevitable, फिर आप search करते हो. Some countries have certain provisions in their constitutions that provide the public with the right to be free from unreasonable searches and seizures. वही बात आ गई कि stop and frisk की तरह ये भी बहुत controversial है क्योंकि a lot of countries, a lot of people, especially जहाँ पे civil rights को बहुत ज़्यादा importance दी जाती है, वहाँ पे इसके against काफ़ी movements होती हैं कि why can any officer come to us and search our place by saying कि okay we suspect something. तो इसके अगेंस्ट जो विदाउट अ वारंट अनरीजनेबल सर्चेस एंड सीजर्स के अगेंस्ट लॉज हैं. द राइट इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट एवरीवन इज entitled to a reasonable right to privacy. ये जो या इन लोगों के से रिलेटेड है जहाँ पे ये चीज़ अलाउड नहीं है, उसकी ग्राउंड्स ये हैं कि वो कहते हैं कि feasible ही नहीं है, लॉजिकल ही नहीं है कि हमारी जो प्राइवेसी है उसको कोई पुलिस ऑफिसर आके ड्यू टू सस्पिशन वो आके उसको इन्वेड करे. Though specific interpretations may vary, this right can often require law enforcement to obtain a search warrant. अब search अगर तो कोई worst से worst state है ना, when you know कि there is no last option, फिर आप without a warrant search करते हो. अगर ऐसा नहीं है, so you need a warrant to enter someone's places, someone's residence or their car and search for it. Law enforcement to obtain a search warrant, you need a search warrant for this. और कंसेंट फ्रॉम द ओनर, या तो वारंट हो अगर ओनर ने अलाउ करा, या फिर सर्च के लिए यू नीड द ओनर टू अग्री बिफोर एंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ सर्च एंड सीजर. सो ये दो चीज़ें ज़रूरी है, या तो ओनर अग्री कर रहा हो या फिर आपके पास सर्च वारंट है. और अगर ये दो नहीं है तो वर्स्ट केस सिनेरियो कोई बहुत ही बड़ी रीज़न है, यू हैव टू सर्च, तो फिर यू गो फॉर इट. अब पाकिस्तान में सर्च एंड सीजर किधर मेंशन है? इफ़ यू ओपन द CRPC, Article 96 to 103 is related to search and seizure. So this marks the end of this lecture. When you go over CRPC, go over the rules related to search and seizure कि पाकिस्तान में कब search और seizure allowed होता है, and make sure to understand that text. थोड़ी सी technical language होती है, but I hope you people are able to understand that. And this is the end of the lecture. In the next lecture, we are going to study arrest procedure क्या होता है. See you then. Allah Hafiz.